So now I'm going to start my lecture with the slide number 4. Problem with broadcasting is for every broadcast frame on the network, each computer uses computational resources, place contents into memory, interrupts the CPUs, allows system software to make a decision whether to discard or use the frame. Now see, broadcasting के साथ issue क्या है? I mean, any information that is being received at the receiver's end, it has to accept that particular information. ठीक है, उस frame को उसको accept करना पड़ेगा. अब then it has to process that particular frame और उसको चेक करना पड़ेगा कि ये ब्रॉडकास्ट है, मल्टीकास्ट है, ये यूनिकास्ट है, या फिर आप उसको छोड़ दें, whether that frame is for me or not. Ultimately, if that frame is not for that particular computer, तो उस कंप्यूटर को, उस फ्रेम को डिस्कार्ड करना है. ठीक है. So this is an extra overhead that we are going to put upon all the computers which are being the part of that particular network. ठीक है ना. एक इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए है ही नहीं, हम उसको उसके पास भेज रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसकी रिसोर्सेज तो यूटिलाइज होंगी ना. So that is the problem with the broadcasting, right? Then if a pair of computers use broadcasting instead of sending them directly, all other computers waste CPU time while discarding the frame. The same thing, I mean, if you want to send information to only 2 or 3 computers or one computer, और उसकी वजह से आपके पास वही इंफॉर्मेशन सारे कंप्यूटर्स को या सारे नोड्स को ओवर द सेम नेटवर्क जाए, तो डेफिनेटली इट वुड बी द आई मीन एक्स्ट्रा यूज ऑफ द रिसोर्सेज व्हिच विल आई मीन वेस्ट द सीपीयू टाइम व्हाइल डिस्कार्डिंग द फ्रेम. अल्टीमेटली वो उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद देखेगा दिस फ्रेम इज नॉट फॉर मी, देन इट हैज टू डिस्कार्ड दैट पर्टिकुलर फ्रेम, राइट. Then we did have a discussion yesterday regarding the multicasting. तो multicasting क्या था हमारे पास? Multicast addressing was if an application program wishes to receive certain frames, then it programs the interface hardware to accept an additional set of addresses. The interface hardware then begins accepting those frames, multicast frames, broadcast frames, and frames that are destined to the station itself. देखें, आपके पास when your data is being received at the receiver's end, तो होता क्या है? The interface that is called as a LAN interface, और LAN interface का मैंने आपको बताया है कि LAN interface is actually your LAN card. इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना. I mean, if somebody is asking you or if somebody is discussing here in this particular discussion or inside a class, मैं LAN interface की बात बार बार कर रहा हूँ, तो definitely the only point with which your computer is being connected with a LAN is called as your LAN interface. और वो LAN interface क्या होता है? आपके कंप्यूटर का LAN card, that is called as your local area network interface card, जिसको हम most probably निक भी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ठीक है. लैपटॉप्स के अंदर तो वो आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज पैक्ड inside the whole casing. But when you are talking about a computer or a desktop computer, so you can see if you are going to open the casing of that particular computer or your desktop, your CPU होता है, ठीक है, तो you will see a slot in which there is a LAN card which is being placed inside that particular slot. ठीक है. और उसका जो पॉइंट होगा that would be आउटसाइड, जहां पे आप उस पर्टिकुलर RJ45 को इंसर्ट करते हैं. ठीक है. तो द इंटरफेस हार्डवेयर दैट देन बिगिंस एक्सेप्टिंग दोस फ्रेम्स व्हिच आर मल्टीकास्ट फ्रेम्स, ठीक है, ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स एंड फ्रेम्स डेटा डिस्टाइंड टू द सॉल्यूशन स्टेशन इटसेल्फ. ये तीनों वो रिसीव करता है. तो फिर जो भी वो आपका जिस तरह का फ्रेम होता है उसको एक्सेप्ट करके आई मीन आगे प्रोसेस कर देता है. आई मीन इट विल चेक वेदर इट इज अ मल्टीकास्ट फ्रेम, whether it is a broadcast frame, or whether it is a frame which is being sent for the destination, right? So for example, computer running an audio application can receive audio frames if the interface are programmed to receive them. The other computers that are not running that audio application will not वेस्ट रिसोर्सेस. ठीक है. तो लेट्स सपोज अगर हमने ऑडियो ब्रॉडकास्ट करना है, तो ऑडियो हमारे पास मल्टीकास्ट करना है, तो वो उन्हीं उसके पास जाएगा जिसके पास वो मल्टीकास्टिंग एड्रेसेस होंगी. ठीक है. लेट्स सपोज 5 to 10 कंप्यूटर्स हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन जस्ट उन्हीं के पास जाएगी जहां पे वो मल्टीकास्ट एड्रेसिंग सेट है. ऑल अदर कंप्यूटर्स वुड नॉट बी गेटिंग दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. ऑन द अदर वे, if I'm going to say you that audio is being broadcasted, ठीक है,
अगर वो ब्रॉडकास्ट हो रही है देन एवरीबडी कैन लिसन इट, ठीक है जी। जो भी आई मीन यूजर्स होंगे, वेदर दे वांट टू लिसन और दे डू नॉट वांट टू लिसन, दे हैव टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। वो अलग बात है कि उसको डिस्कार्ड कर दें, ठीक है जी। तो दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज ब्रॉडकास्टिंग। और मल्टीकास्टिंग के अंदर हमारे पास स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के रेसिपिएंट्स होते हैं, राइट। Then identifying packet contents. Destination must get some clue about how to interpret frame data. Now, ultimately, I have told you that whenever the frame is being sent over the network, it might contain two things. एक तो आपका payload होता है. I mean, payload is something you may call it as an actual data, जो आपके पास frame के अंदर मौजूद होता है, जो actual data जो आप send कर रहे हैं. Other than that particular payload, we might have the controlled information. Control information के बारे में I have told you in our previous lectures or in previous slides that you have the start of frame, end of frame, CRC. These are the control bits. Except from these three things, there are other control bits also which are being present inside your frame. वो क्या हैं? We will be discussing. Might be explicit frame types, identifying values included with frame, describe type of included data. Implicit frame type, receiver must infer type of frame of that particular data, right? तो ये दो types के explicit और implicit frame types हैं हमारे पास. Then you have headers and frame formats. I have told you that what is that term header is being used for. Header का मैंने आपको बताया था कि header is the information that is being attached with the frame or with the packet or with the segment as the data is being traveling from top to down in an OSI layer. I have told you that ना कि जी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन पे आपके पास होता है PDU, ठीक है। जैसे ही वो PDU आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर पहुंचता है तो PDU will not be recognized as PDU. वो क्या कहलाता है? That is called as your TCP segment. When it comes down to the network layer, it becomes packet. When it comes down to the data link layer, it becomes frame. तो ये packet, segment, frame क्यों बन रहे होते हैं? Actually, there are certain sort of information is being attached at each layer of an OSI model और उसको हम क्या कहते हैं कि ये headers attach हो रहे हैं हमारे पास हर डेटा लिंक हर लेयर के ऊपर OSI लेयर के ऊपर. All contemporary standards use the following journal format. Frame header has address and other identifying information. Information typically in the fields with fixed size and location. Data area may vary in size. Now see, actually एक frame के अंदर आपके पास बहुत सी different fields होती हैं, ठीक है। वो headers क्या क्या होते हैं? You might have the source and destination addresses. You might have the typical field in fixed size and location. And the third one is data area, जहाँ पे आपका actual data place हो रहा है. That might be varying in size. वो आपके पास vary करेगा from frame to frame, ठीक है। कहीं पे किसी frame का data आपके पास ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा. I mean it varies, right? Uh, so this is headers and frame format. I mean you are very much familiar with the frame format. हमें पता था कि ये आपका एरिया है जहां पे आपका डेटा होगा, फ्रेम डेटा एरिया, और यू मे कॉल इट एज अ पेलोड, ठीक है। पेलोड को आपने जस्ट याद रखना है कि दिस इज समथिंग लाइक अ प्लेस वेयर योर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्लेस्ड। और फ्रेम हेडर के अंदर आपके पास सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, योर प्रीएम्बल्स, योर control bits, your CRCs and all these things will be added, right? So I will be explaining you in the next few slides. Ethernet अगर यूज हो रहा है ना तो Ethernet का मतलब ये है कि this is wired frame, not a wireless frame, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज आपने याद रखनी है। Ethernet is always used for the wired networks, ठीक है ना। ये चीज पता है आप लोगों को, everybody, right? Okay. Okay, so what we have, yes, data address that is 6 bytes. Make sure, अब ये थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। आपके जो headers है ना, ये 6 byte का destination address होगा, 6 byte का source address होगा, और 2 bytes का आपके पास frame type होगा। तो कितने bytes हो गए? 14 bytes। और कितनी bits हो गई? 14 into 8 कितने होते हैं? I think 112. I don't know. 112. 112.
Yes, 112 sir, ना, हाँ 112. 112 ठीक है। तो ये 112 बिट्स आपकी हो गई विच आर बीइंग आई मीन असाइंड फॉर द हेडर। ठीक है, अब ये डिफरेंट यू हैव द डिफरेंट एड्रेसेस और समथिंग लाइक दैट। देन यू हैव द डेटा इन फ्रेम जिसे हम पेलोड कहते हैं एक्चुअल में। ठीक है, ये आपके पास है 46 to 1500। ये आपके पास इतना डेटा जो है एक फ्रेम के अंदर ट्रैवल कर सकता है। तो इट कुड बी द पॉसिबिलिटी 46 बिट्स हों आपके पास या आपके पास 1500 बिट्स हों। तो आई मीन इट वेरीज डेटा इन फ्रेम पेलोड इट माइट वेरी। ठीक है जी। देन यू हैव द टू ओनली वन न्यू थिंग दैट इज प्रीएम्बल। लेकिन सीआरसी आपको पता है, लेकिन यहाँ पे देखें सीआरसी आपके पास 4 बाइट्स का है। तो 4 बाइट्स कितने हो गए आपके पास? 64 बिट्स, ऐसा ही हुआ ना? नो 32 नो नो, 32 32 सॉरी, 32। लेकिन 32, sir, मैंने 32. आपको 16 का बताया था जो हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था। 8 बिट्स के दो थे। ठीक है, तो वी डू हैव मल्टीपल आई मीन सेट ऑफ सीआरसी ना। आई थिंक 16 भी था, 32 भी था और 8 बाइट्स भी था, 8 बिट्स भी था। ठीक है, तो आई थिंक इन द लास्ट डायग्राम दैट आई हैव डिस्कस विथ यू वी हैव कैलकुलेटेड द सीआरसी ऑन आई मीन 16 बिट्स। ठीक है, और जिसमें हमने 8 और 8 में उसको डिवाइड किया था और समथिंग लाइक दैट। सो दैट वाज द सीआरसी एंड वी नो दैट इट डजंट मैटर कि आपके पास वो कितने उसका है। द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ एन सीआरसी इज टू कैलकुलेट द value, and that value is going to be calculated at the sender's and the receiver's end, and this is just for the error detection mechanism. Okay, make sure I have told you that CRC is not a header. Make sure ये आपके पास एक स्पेशल टाइप की फील्ड होती है जो सिर्फ डेटा लिंक लेयर के अंदर होती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रेलर। आई हैव डिस्कस विथ यू इन द लास्ट क्लास। ठीक है, कि दिस इज अ ट्रेलर दैट इज बीइंग अटैच्ड एट द एंड ऑफ द फ्रेम, और ये सारे के सारे आपके पास हेडर्स हैं। ठीक है, और ये प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल इज समथिंग the bit that is going to represent that this is the start of the frame, कि आपका जो फ्रेम है इस पर्टिकुलर बिट से स्टार्ट हो रहा है। आई मीन हाउ द रिसीवर नो दैट कि आपका फ्रेम यहां से एक न्यू फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि दिस इज द प्रीएम्बल, के स्टार्ट ऑफ द फ्रेम इज गोइंग टू बी आई मीन रिकॉग्नाइज्ड कि आपका यहां से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू बिट्स, और दिस इज द फ्रेम फॉर्मेट और द ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट। if we can come to the next slide, preamble, इन अब हर एक की अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन दी हुई है स्लाइड के अंदर। आई मीन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रीएम्बल इट इज द रिसीवर सिंक्रोनाइजेशन, एज आई ऑलरेडी डिस्कस यू इन स्टार्ट ऑफ द फ्रेम, कि आपके पास भी यहाँ से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। आई मीन लेट्स सपोज देयर आर थाउजेंड्स फ्रेम्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। अब उन फ्रेम के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए कि जी ये वन फर्स्ट फ्रेम था, यहां से यहां तक फर्स्ट फ्रेम है, अब ये सेकंड फ्रेम स्टार्ट हुआ, ये थर्ड फ्रेम स्टार्ट हुआ, who is going to differentiate this thing? That is the preamble is going to differentiate between all these frames, right? Then you have the destination address that is going to identify the intended receiver. We know that यदि आपके पास destination address कौन सा है। source address is going to hardware address of sender, जिसका MAC एड्रेस होगा सोर्स का, दैट इज द सोर्स एड्रेस, और डेस्टिनेशन एड्रेस का भी मैक एड्रेस ही होगा, जो जिससे हमें पता चलेगा कि आपके पास डेस्टिनेशन डिवाइस कौन सी है। देन यू हैव द फ्रेम टाइप, टाइप ऑफ डेटा कैरिड इन फ्रेम, क्या आई मीन एसटी है या किस तरह का डेटा टाइप है जो आपके पास इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर जा रहा है। ठीक है, देन यू हैव द डेटा फ्रेम पेलोड, जिसमें आपके पास एक्चुअल पेलोड या डेटा होगा, और CRC is a 32-bit CRC code that is going to calculate the error detection mechanism inside your frame. So this is the complete frame format. आपको पता होना चाहिए if somebody asks you that यदि frame के अंदर कौन कौन सी control bits होती हैं, क्या preamble क्या होता है, तो you must have to tell them कि एक frame जो होता है ना, जो data link layer पे काम करता है, it must contains your CRC data frame type, source address and destination address and the preambles. ठीक है जी, is that clear? Then you might have the Ethernet fields. Preamble and CRC is often not shown, right? Destination address of all ones in the broadcast address. Special values are reserved for frame type field. ठीक है जी, तो वही चीज आप यहाँ पे भी बता रहे हैं कि जी प्रीएम्बल और सीआरसीज आपके पास हेडर्स में नहीं आते,
but they are the control bits. ठीक है जी. Destination address of all ones in the broadcast address, अगर आपके पास all ones हैं तो definitely that would be a broadcast address. Special values are reserved for frame in the type field. Type field के अंदर अगर आपने कोई special data भेजना है, ये special values are being reserved in the frame type field, right? Now you can see the Ethernet fields or something like that कि ये values हैं like 0000-05 DC. This is the hexadecimal values reserved for use with IEEE 802.3. 0800 is being used for Internet IP version 4. 0805, I mean ये आपके पास Ethernet fields की values है और in response आपके पास वो क्या फंक्शनैलिटी है उस पर्टिकुलर फील्ड का क्या मतलब है, दैट इज एक्चुअली इज बीइंग यूज्ड फॉर दिस. और आखिर में आप देखें एफ 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 इज द ब्रॉडकास्ट मींस ऑल द वैल्यूज आर रिजर्व्ड. सो दिस इज व्हाट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ईथरनेट फील्ड्स. ठीक है, आई मीन ये वैल्यूज आपके पास शो हो रही हैं हेक्साडेसिमल के अंदर. ठीक है, और ये उनकी appropriate meanings हैं कि let's suppose अगर 8005 अगर वैल्यू होगी तो that is going to be represented Hewlett Packard Corporation Network Probe Packet. ठीक है, अगर 8008 है तो 80 and 80 Corporation. I mean these are the just bits which are going to represent certain sort of instructions, right? सर ये प्रेम्बल की वैल्यूज हैं? हाँ जी, नहीं 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 नहीं, दे आर द टाइप फील्ड जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे. ये जो फ्रेम टाइप है जिसमें हम स्पेशल टाइप ऑफ डेटा रख सकते हैं, ये उसका मतलब उसमें अगर आप कोई स्पेशल टाइप ऑफ डेटा रखना चाहते हैं ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है. preamble is something that is going to represent कि this is the start or end of the frame. ठीक है जी, तो आगे चलते हैं हम. आगे क्या है हमारे पास, frames without type fields. Some LAN technologies do not include a type field. अब type देखें, a type is this. Make sure this is the type, frame type. ये जो चीज है ना जो 2 बिट्स का है आपके पास या 2 बाइट्स का है, this is what you can call it as a frame type field. Sender and receiver can agree on interpretations, agree on a single data format and use only that format, limits LAN to one type of data. All computers on LAN must use the one format, agree to encode the data format in the first few bytes of the data field. Now see, अगर आप एक ही LAN के अंदर कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं तो you must have to set, not you, but definitely the network who is going to create a source and destination MAC addresses and who are going to find out or who are going to create these particular fields, they have to set that all the data that is being sent and received must be of same type, they have the same data formats, limit LAN to one type of data. क्या इस LAN के अंदर एक ही टाइप का डेटा यूज होगा, all computers on LAN must use one format, agree to encode the data format in the first few bytes of the data field. I mean for the security reason, if you want to encode the data in the early stage, I mean in the format, तो आप उसको, I mean it totally depends upon the type fields कि आपके पास अगर टाइप फील्ड्स आप यूज कर रहे हैं या उनको यूज नहीं कर रहे तो उनको यूज करते हुए आप ये सारे के सारे स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं. Now encoding the data type, illustration of using data area to encode data type. You have the frame header, you have the type information and you have the frame data. So by using this particular type information, you can, I have told you that okay, this type information is going to tell you that okay, if you want to send any sort of special information inside your frame, so you can use this particular field. If I am talking about this particular frame, देखें preamble हमें पता है कि this is going to tell you that कि जी this is going to represent, this is the start of the frame or this is the end of the frame. ठीक है, fine, fair enough, ये चीज खत्म हो गई. destination address हमें पता है ये destination का MAC address होगा. source address हमें पता है कि ये source का MAC address होगा. ठीक है, इसमें तो कोई I mean वो चीज है ही नहीं. आ जाएं अभी फ्रेम, अभी टाइप को छोड़ दें. ठीक है, अब आ जाएं डेटा इन फ्रेम. यहाँ पे आपका डेटा होगा, देयर इज नो एनी कंट्रोल बिट, दिस इज आल्सो फाइन. CRC, we know that that is the error detection mechanism in which we are going to find the error detection mechanism. ठीक है, अब बाकी जो एक चीज we are being left with, this is a type. अब type is a field in which you can place different, not you but your
sender can place different sort of special characters or special mechanism. Let's suppose if some data is going to be encoded, or if some special character is going to be sent and received through that particular frame, that has to be set in this particular field. तो ये field आपके पास सेट की गई है कि अगर आपने स्पेशल टाइप ऑफ कोई भी मैकेनिज्म परफॉर्म करना है अपने फ्रेम के अंदर, यू हैव टू डू इट विद दैट पर्टिकुलर टाइप फील्ड, राइट? सो ओवर हियर दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू टेल यू, इनकोडिंग द डेटा टाइप. अगर इलस्ट्रेशन ऑफ यूजिंग डेटा एरिया टू इनकोड डेटा टाइप, तो अगर आपने डेटा इनकोड करना है तो यू हैव टू यूज द टाइप इन्फॉर्मेशन. यू कैन नॉट यूज द फ्रेम हेडर, यू कैन नॉट यूज योर फ्रेम डेटा, राइट? So, to ensure interoperability, format of encoding area must be universally agreed upon. Format typically set by the standards body. I mean, there are certain sort of standard bodies which are being used to encode and decode your data. तो उनको यूज करते हुए आपने यहाँ पे certain control bits place होती हैं which are going to show you that your data has been encoded or something related to that. ठीक है जी? Then IEEE 802.2 LLC. LLC stands for Logic Link Control. अब देखें आपके पास ना जो डेटा लिंक लेयर है, I didn't told you previously, but as we have explored more details regarding the data link layer, your data link layer is divided into two sublayers. One is called as an LLC, another one is called as MAC. ठीक है जी? आई एम अगेन गोइंग टू रिपीट इट. एक आपके पास सब पार्ट होता है LLC का और दूसरा आपके पास सब पार्ट होता है MAC का. LLC actually going to support your network layer and MAC is actually going to support your physical layer. ठीक है जी? जैसे हम कह लेना कि हमारे पास डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर को आपने सेंटर से डिवाइड कर दिया. सेंटर से डिवाइड करने के बाद एक्चुअली उसका काम तो फिजिकल एड्रेसिंग ही होती है, लेकिन उसका एक सब वर्क जो या सब काम हम समझ लें, दैट इज गोइंग टू बी परफॉर्म बाय योर डेटा लिंक लेयर. वन इज LLC which is going to support your network layer and the another one is your MAC layer that is going to support your physical layer. ठीक है? तो ये दोनों लेयर्स को हाफ और हाफ वे से सपोर्ट कर रही होती है, right? So to ensure IEEE 802.2 standards includes LLC sub network attachment point that is called as your SNAP header. SNAP or LLC format widely used by the Ethernet, right? Now see, this is your LLC. This is an hexadecimal value. LLC में AA03 3 octet OUI identifier standard organization and the 2 octet type value defined by that organization. I mean ये एक पूरा frame format का standard है. One part is called as your LLC, another one is called as your SNAP, right? तो ये दोनों part आपके पास मिलके एक पूरे के पूरे frame format को define कर रहे होते हैं. ठीक है? And make sure AA, all these are the hexadecimal values. ठीक है? So LLC portion indicates SNAP fields to follow. OUI organizational unique identifier identifies Ethernet specification organization. Type field interpreted as an Ethernet, in this case that is your IP. ठीक है जी? तो unknown types में for either encoding format, some computers may not be prepared to accept frame for of some type like protocol type not installed, newly defined type. Receiving computer examines type field and discard any frame with unknown type. Actually अब इस चीज का मैं आपको एक्सप्लेनेशन इस तरह से दूं कि आपके पास जो LLC और MAC होता है ना, LLC is going to support the network layer. I mean, whatsoever the conditions which are going to be met in the network layer, they are going to be supported by LLC. I mean, आपके पास जो error correction और error detection mechanism है ना, that might be the functionality of your network as well as your LLC. मतलब डेटा लिंक का जो हाफ पार्ट है ना, अपर वाला, दैट इज गोइंग टू execute this particular portion or this particular work. लेकिन जब हम डेटा लिंक लेयर में मैक की और फिजिकल लेयर की बात करते हैं, तो मैक एड्रेस इज गोइंग टू योर फिजिकल लेयर इज गोइंग टू सपोर्ट योर मैक लेयर. ठीक है? तो मैक जो है आपके पास डेटा लिंक लेयर का अदर हाफ पार्ट है जो आपके पास
how the signal is going to be transmitted, how the signal is going to be transformed into the zeros and ones and something like that, that is going to be managed by your I mean to say that MAC layer or the second half layer of your data link layer. ठीक है, तो this is regarding that. Network analyzer, a network analyzer or network monitor or network sniffer is used to examine the performance or a debug a network. Can report statistical such as capacity utilization, distribution of frame size, collision rate or token circulation time. Now see, आपने नाम सुना होगा packet analyzer or network analyzer or you have the different sort of network sniffers or something like that. These are the software applications which are being running over a network. अब देखें, these I mean I think most of you or those who have an interest of cyber security or internet security, तो उसमें अगर आप नेटवर्क के ऊपर कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, I mean these are the types of softwares which are going to sniff the information that are being propagated over a network. ठीक है, अगर हम LAN के ऊपर I mean if you are going to install certain sort of this particular software over a LAN, तो LAN के ऊपर आपके पास कौन सी ऐसी चीज है, what type of information can be sniffed? Ultimately a frame, because LAN के ऊपर तो आपके पास फ्रेम ही जा रहा होता है. अगर आप WAN के ऊपर अगर कोई इस तरह का डिवाइस या इस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो it is going to sniff what? It could be going to sniff the packets. तो अगर आपने पैकेट स्निफिंग करनी है, तो you have an IP. I mean if you are going to sniff the packet, if you are going to capture any type of packet, तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी पैकेट में से कि इस पैकेट के अंदर आईपी कौन सी है, ठीक है, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी आपको मिल जाएगी, और इन एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर आईपी जो भी डेटा होगा यू कैन आई मीन कैच और यू कैन गेट इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पैकेट. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ लैन टेक्नोलॉजी, तो लैन के अंदर जो आपको डेटा मिलेगा दैट वुड ऑलवेज बी व्हाट, दैट वुड बी ऑलवेज बी योर फ्रेम. और फ्रेम के अंदर आपको कौन सी चीज मिलेगी? योर फ्रेम इंफॉर्मेशन, जिसमें आपके पास सोर्स मैक हो जाएगा और डेस्टिनेशन मैक हो जाएगा. ठीक है, तो नेटवर्क एनालाइजर्स आर द सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और द स्मॉल एप्स which are going to sniff certain sort of network information which is being moving over that particular LAN, or you may call it as a WAN. Operation of network analyzer basic idea is a computer with a network interface that receives all frames, sometimes called promiscuous mode. Many desktop computers have interface that can be configured for promiscuous mode. Combined with software, computer can examine any frame over the LAN. Communicate across the LAN is not guaranteed to be private. ठीक है जी, तो ये जनरल आइडिया है नेटवर्क एनालाइजर का कि आप उसके थ्रू आपके नेटवर्क के ऊपर लैन के ऊपर, ठीक है, अल्टीमेटली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा लिंक लेयर तो हम लैन की बात कर रहे होते हैं. तो जो भी ट्रैफिक आपकी जा रही है उसको एनालाइज करने के लिए यू माइट बी यूजिंग द नेटवर्क एनालाइजर. कंप्यूटर रिसीव्स एंड डिस्प्ले बट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू फ्रेम्स ऑन द लैन, राइट. आई मीन इसको आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, आप जस्ट उसको पैकेट को रिसीव कर रहे होते हैं. रिसीव करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं कि उसका सोर्स क्या है, मैक क्या है, एंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट इज, एंड दिस इज जस्ट द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू गेट थ्रू दैट पर्टिकुलर नेटवर्क. Filtering incoming frames. Analyzer can be configured to filter and process frames, count frames of a specific type or size, display only frames from or to specific computers. In general, can be configured to match values of any field and capture only those frames meeting the filtered specification. Actually, आपको मैं ये बताऊं, this is some sort of hacking mechanism. I mean आपको let's suppose कंप्यूटर B की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अल्टीमेटली हाउ यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और दैट पर्टिकुलर एनालाइजर के आपके पास जो सोर्स मैक अगर आपको पता चल जाता है कि ये सोर्स मैक कंप्यूटर बी का ये है, तो अल्टीमेटली जो जो पैकेट्स आपके पास कंप्यूटर बी से या इस मैक एड्रेस से आ रहे होंगे ना, दे आर गोइंग टू बी रिसीव्ड एट द नेटवर्क एनालाइजर. All other packets which are not coming from that particular source would be discarded. Very simple. ठीक है, ये इस तरह की होती हैं, इस तरह की एप्स होती हैं जिनको आप नेटवर्क के ऊपर लगा देते हैं and they are going to I mean
get the information from the network. And make sure when we will be learning inshallah information security, agar everything would be fine up to the next semester, तो इंशाल्लाह हम जो है उसमें ये सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे, किस तरह से हम इस चीज़ को हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं और किस तरह से आप डिफरेंट चीज़ों को, या जो चीज़ें आपके पास नेटवर्क के ऊपर डेटा मूव हो रहा होता है, आप उसको कैसे स्निफ कर सकते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू इनकोड इट एंड हाउ यू आर गोइंग टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ योर नेटवर्क. All these things we have to discuss at our I mean in the network security or the information security subject inshallah in the next semester, right? So then we have the summary. Today we have covered regarding multicasting, frame type identification, Ethernet frame format, frame without type fields, and network analyzer. So that is all for today.